Hello everybody, hello students. Today I am going to make a video for the first chapter of Secretarial practice, that is corporate finance. So we will see in the detail corporate finance. Corporate means separate legal entity, यानी कि अलग से जिसकी पहचान होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट. बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट. लेट्स टेक एन एग्जांपल, जॉइंट स्टॉक कंपनी. नाउ लेट्स गो फॉर फाइनेंस. What do you mean by word finance? Finance means what? Finance is related to money and money management. Finance plays a very important role. Without finance, no business activity can be taken out. If you say that, the real word we have to say over here, finance is like a lifeblood of a business. जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही बिजनेस में फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है. इसके लिए बगैर फाइनेंस के हम बिजनेस नहीं कर सकते. सो लेट्स सम अप विद दिस वन. कॉर्पोरेट फाइनेंस है क्या? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशंस. मतलब पैसे को रेज करना और पैसे को अच्छी तरीके से यूज़ करना. दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए कॉर्पोरेट फाइनेंस. इफ़ यू सी द डेफिनेशन, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस गिवन इन योर बुक. एक हेनरी हॉगलैंड का डेफिनेशन है, उन्होंने भी यही कहा है. मैं आपको दिखा दूंगा हेनरी हॉगलैंड का डेफिनेशन. उन्होंने भी कहा है एक्विजिशन यानी कि रेजिंग ऑफ फाइनेंस एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसे को कैसे रेज करना और कैसे अच्छी तरीके से यूज़ करना. Corporate finance refers to acquisition of finance and application of finance. Just now I have told you corporate finance refers to acquisition of finance and application of finance. मतलब पैसे को अच्छी तरीके से यूज़ कैसे करा जाए. पहले acquisition of funds, वहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, एप्लीकेशन ऑफ फंड और यूज़ ऑफ फंड. पैसे को कैसे रेज करना और कैसे अच्छी तरीके से यूज़ करना, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस. एंड फाइनेंस मीन्स नॉट ओनली अ मनी बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ मनी. इट मीन्स एक्विजिशन और रेज एंड यूज़ ऑफ फाइनेंस. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, introduction to corporate finance. Finance is the lifeblood of any business organization. Finance means inflow and outflow of cash. Finance is a key factor for all business activity. Finance generates more finance, and finance is an inseparable part of any business organization. If you see the sources of finance, so we have got the two sources, that is internal and another is not external. Internal sources of finance, that source the finance which is available within the company, that is reserve fund. Every year company used to make a profit. Some part of the profit it has been kept aside, that is known as reserve fund. Now external source of finance, we have company used to collect the finance by the outside of the business, that is issue of shares, issue of debentures, issue of bonds, loan from bank and accepting deposit from the public. It means these are the external sources of finance which can be collected by a company by the issue of securities, we can say. Now we will see capital requirement. Capital requirement means what? Capital requirement hota kya hai? While deciding about the volume of the capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital and working capital requirement. Fixed capital hota kya hai? Fixed capital which is used for buying fixed assets and which are used for the longer period of time, it is also known as permanent capital. Fixed capital को permanent capital भी कहा जा सकता है. Example fixed assets का है purchasing of land, building, plant machinery, motor, etc. Investment in fixed capital implies more risk as compared to working capital. Fixed capital funding can come from selling shares, debentures, bonds, long-term loans, etc. Investor invest money in fixed capital hoping to make a future profit. Now let's see working capital. Working capital refers to the sum of the current assets. Working capital का एक formula भी है, current assets minus current liability. Okay. Working capital is also known as circulating capital. ये अलग कलर में मैंने लिखा है आपके लिए, आप देख सकते हो. और ये fill in the blanks के लिए this will help you out. It keeps on changing. Working capital is invested in short-term assets such as cash, account receivable, inventory. It is also known as what? Stock, etc. Investment in working capital for getting immediate returns. Investment in working capital is very less risky. We can say investment in working capital is less risky as compared to fixed capital. So fixed capital में पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करना एक लेस रिस्की. और वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे कंपनी को पैसे की ज़रूरत लगती है, दैट इज़ नोन एज व्हाट? वर्किंग कैपिटल. दिस यू विल गेट इन द डिस्टिंग्विश. मोस्टली ये डिस्टिंग्विश में मिलता है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल.